begin our discussions by sitting quietly for 10 minutes, 15 minutes, ताकि चित्त समाहित हो जाए और हमारे discussions ज़्यादा focused रहें. आज हम the last sanya will discuss. So we'll sit quietly for 10-15 minutes.
बिगिन और विवेचन शुरू करते हैं धम्म संज्ञा पे। तो सबसे पहले तो ये शब्द जो धम्म है, इसको, इसके जो स्कोप है, हम सब जानते ही हैं कि उसका स्कोप बहुत वाइड है। पीटीएस डिक्शनरी है, उसके बड़े बड़े पेज हैं और उस बड़े 5 पेजों में जाके उसका डिस्क्रिप्शन है, वेरियस अल्टरनेटिव मीनिंग्स। जो कई जगह अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे धम्म संज्ञा का क्या संदर्भ है वो समझने की आवश्यकता है। सामान्यतः धम्म शब्द जो है भगवान की टीचिंग के बारे में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। स्वाख्यातो भगवता धम्मा, so then it refers to the teachings of the Buddha. Dhamma is also used to describe anything and everything. Whatever we experience, we say is Dhamma. तो इसको क्लियर करने के लिए अब धम्म में परमार्थ धम्म और समुत्ति धम्म हम कई बार सुनते हैं। तो कहा कि जो धम्म शब्द का इस्तेमाल फिक्स कर दिया, अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कन्वेंशनल रियलिटीज विच वी नो थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। इंद्रियों के माध्यम से अब संसार को जानते हैं, तो उसकी जो अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि इसको और ज़्यादा तोड़ तोड़ के इससे नीचे नहीं जा सकते, उसको कहा परमार्थ धम्म। तो उसके रूप चित्त चैतसिक और निब्बान। तो निब्बान तो अनकंडीशनड है और रूप चित्त और चैतसिक कंडीशनड है। दिस इज व्हाट इज विद इन द और जिस रेल में हम जी रहे हैं, सारे जितने भी लोग हैं उन सब उनमें रूप चित्त और चैतसिक है। कुछ लोग अरूप है, उसको छोड़ देते हैं हम। उसमें चित्त चैतसिक तो होंगे ही। चित्र क्या हुआ? जो विज्ञान है बेसिकली, जिससे हम कॉग्नाइज करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सुगंध महसूस करते हैं। और चैतसिक जो दूसरे मेंटल फैक्टर उसके कॉग्निशन के साथ चलते हैं ताकि कॉग्निशन पूरा हो जाए। जैसे हमने अभी तक सीखा, वेदना है, संज्ञा है और मानसिकार है, इसकी चर्चा हो चुकी है। इसी तरह दूसरे फैक्टर्स जैसे लोभ है, दोष है, मोह है, अलोभ, अदोष, अमोह। अब इन सब को हम अल्टीमेट क्यों कहते हैं? क्योंकि लोभ को, एक्सपीरियंस को, और आप उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसकी बिल्कुल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है लोभ के एक्सपीरियंस की, द्वेष के एक्सपीरियंस की, मोह के एक्सपीरियंस। दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। इसी तरह बाकी में चित्त जो भी है, तो उस सेंस में जो मेंटल फैक्टर्स हैं, जो अरूपिनो धम्मा है, तो शब्दी धम्म यूज किया जा रहा है, वो सब हम मन के ऑब्जेक्ट उनको समझ सकते हैं। वैसे भी जब हम किस तरह से विज्ञान जागता है उसको स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट होते हैं। चक्षु का ऑब्जेक्ट है फॉर्म, रूप। आँख, कान का ऑब्जेक्ट है शब्द। इसी तरह मनोविज्ञान जागने का ऑब्जेक्ट है धम्म, अर्थात जो भी मन से कॉग्नाइज होता है। दिक्कत उसमें ये हो जाती है कि मन से सिर्फ थॉट्स कॉग्नाइज नहीं होते, वो थॉट्स जो है ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हो सकते हैं। हमने जैसे तिकपठान में समझा था, थॉट्स कुड बी रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट, साउंड, स्मेल एंड सो ऑन। अब उसकी तो हम चर्चा कर चुके हैं, बिकॉज दे आर दी संन्यास। 5 संन्यास जो हमने कंसिडर कर चुके हैं वो ये है, रूप संज्ञा, धम्म से शब्द संज्ञा एंड सो ऑन। दे आर आल्सो बेसिकली बेस्ड ऑन thoughts about these things. Now what are we going to focus exclusively on? Mental objects, direct mental objects, concepts, ideas, जो कि डायरेक्टली मन से कॉग्नाइज होते हैं। तो हमारी जो अवधारणाएं हैं, विचार हैं, जिनको डायरेक्टली मन जानता है,
जो मानसिक गतिविधि के आलम्बन है, वो उसको हम धम्म कहेंगे। मैंने सर्च किया था इसमें साउंड सुत्ता सेंट्रल में कि धम्म संज्ञा कहाँ पे आता है, तो बहुत जगह नहीं आता, करीब 200-250 करीब थे शायद, याद नहीं ठीक से, हंड्रेड्स में थे, बाकी चीज़ें थाउजेंड्स में आती। तो go through and then most of the time they are repeated. तो अधिकतर जगह ये शब्द आता है, धम्म धातुम पतिच्च उपजति धम्म संज्ञा। धम्म संज्ञा जो है धम्म धातु के आधार पे पैदा होती है। और उसके कुछ उदाहरण जो आते हैं, because we're trying to understand in tune with the teachings. एक सूत्र आता है अंगुत्तर निकाय में, छोटे छोटे सूत्र हैं बहुत सारे, बाल वग्ग कहा गया, फूल्स कौन से, तो भगवान उसमें कहते हैं दो तरह के मूर्ख होते हैं। कौन से? जो टीचिंग नहीं है उसको टीचिंग मानते हैं, जो टीचिंग है उसको टीचिंग नहीं मानते। तो उसका शब्द इस्तेमाल करते हैं वहां पे, योचे अधम्मे धम्म सन्नी, अधर्म में धम्म को देखते हैं। अब उसका ट्रांसलेशन आप धम्म में टीचिंग को कर सकते हैं, धम्म को राइटियसनेस की सेंस में भी कर सकते हैं। तो एक ये तरह के कैटेगरी के फूल्स हैं, दूसरे योचे धम्मे अधम्म सन्नी। अधम्म सन्नी का ट्रांसलेट किया गया, जो टीचिंग नहीं है उसको टीचिंग मानते हैं। यू कैन आल्सो से जो राइटियसनेस है उसको ठीक नहीं मानते, उसको समझते ये पॉसिबल नहीं है। एंड व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन इट, यू कैन सी दिस इज ट्रू ऑफ मैनी पीपल। मैनी पीपल थिंक कि आजकल के ज़माने में शील का पालन करना नुकसान करने वाली बात, अपना नुकसान ही होगा आपका शील का पालन करेंगे। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई बार मैं सुनता हूँ, रहते हुए आप थोड़ा एग्जैगरेट नहीं करोगे अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को, अपने कुछ दोष छुपाओगे नहीं, दूसरों के दोष बढ़ाओगे नहीं, तो आगे प्रोग्रेस कैसे करोगे? सो दैट विल बी सीन एज अधम्मे धम्म संज्ञा। तो बेसिकली शॉर्टली कहें कि विचारों के प्रति हमारी क्या धारणा है। और आप देखेंगे, आप सोचेंगे नहीं हमारी तो ऐसी कोई धम्म संज्ञा के प्रति अटैचमेंट नहीं है, बट if you see it deeply, there are so many attachments and so many perceptions about which we have attachments. When I look at my own mind over the decades, there was a time जब यही भाव आ गया था कि जो लोग शरीर की वेदना को नहीं देखते वो भगवान की श्री को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये परसेप्शन बन गया, बहुत वर्षों तक रहा। इसी तरह से बॉडी स्कैन करने का ही मतलब भगवान की ठीक, यही उन्होंने पढ़ाया और कुछ नहीं। ये जो महायाना वाले बातें करते हैं या दूसरे ट्रेडिशन वाले समझाते हैं रिफ्लेक्शन करो, ये करो, ये भगवान की टीचिंग, प्रिंसिपल टीचिंग नहीं, कोर टीचिंग नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग। I don't know if some of you have that feeling, but you can check. There's a perception. The typical धम्म संज्ञा, जिसके प्रति अटैचमेंट स्ट्रांग होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज है हम सब समझ सकते हैं। या कई बार ये विचार रहता है भगवान ने ही सिखाया कि जो अनुभव हो रहा है उसे देखते रहो बस, और कुछ नहीं। वेरी क्रिटिकल थिंग्स। क्या यही भगवान की टीचिंग है? I'm not saying that is right or wrong. That is different matter. Attachment that we can analyze separately. Attachment to this, आप सोच सकते हैं उसका कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा हमारे प्रैक्टिस में। शायद सुना होगा एक बहुत मशहूर जर्मन फिलोसोफर हुए थे नीट्स, कई उसको नाइट से पढ़ते हैं, कोई नीट्स चैंट करते हैं। उनका विचार था कि करुणा, एकता का भाव, हम एकत्व भाव और विनम्रता, ये सब जो है दे आर मॉरल्स ऑफ द स्लेव्स। Compassion, humility, equality, these are morals of the slaves, the weak people.
Morals of the masters are anger, ruthlessness, arrogance. और तभी Superman आएगा. He called it Ubermensch. Then only you will have Superman. And this is the Dhamma Sanya, which people say was adopted by Nazis. And he used to say, जो weak है, then he will use the survival of the fittest to say weak should be helped to perish, so that the Uberman, the super new race arises, which consists of Superman, which will be the real evolution of human being. So you can see what impact it has had. So they're very powerful. So Dhamma Sanya is really very powerful. और फिर आइडियोलॉजीज जो हम देखते हैं, communism is the best thing, socialism is the best, capitalism is exploitative, it's very bad. You can see it. So you can see these are the typical. I'm just giving you examples ताकि आप डिस्कशन करें अपने रूम्स में, you know what exactly is this Dhamma Sanya और इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है. So we can break out in different groups and study this, interact and understand this. आप मुझे वो बना दीजिए. हाँ जी सर, एक मिनट. Sir, we have got 3 people with the rights to record the breakout rooms. Yeah, Sonal, Dr. Sonal, Nikhil ji and Shivendra ji. I'm not able to see the breakout. ठीक. So I formed 3 groups. पहले ग्रुप में निखिल जी हैं, दूसरे ग्रुप में शिवेंद्र जी हैं, तीसरे में सोनल है. So kindly do the recording and also act as the coordinators of discussions.
So may I request group number 1 to give their summary of their discussions. जी सर, मेरे ग्रुप में वैभव थे, भारती आंटी थी, कमलप्रीत जी थे और लेटर गार्गी जी ने ज्वाइन किया था। सो एक डिस्कशन हुआ जो आपने समझाया था उसी की बेसिस पर। जैसे वैभव ने एग्जांपल दिया कि वो एक कार लेने जा रहा है और लेट्स से उसको कार पसंद नहीं आई, तो उसमें अगर वो ये कहता है कि मुझे कार का कलर पसंद नहीं आया, तो वो तो रूप संज्ञा होगी। लेकिन अगर उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि कार ही बेकार है, कार लेना ही बेकार चीज है, कार में क्या रखा है, तो उसकी वजह से कार नहीं ले रहा है, तो उसने बोला कि ये मेरी धम्म संज्ञा है। तो वी ट्राई टू डिफर फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी को साउंड पसंद नहीं आ रहा है इसलिए कार नहीं ले रहा है, या उसके दिमाग में एक थॉट है कि कार इज यूजलेस सिस्टम। तो वो काफी अच्छा था। फिर उसने अपना एक दूसरा एग्जाम्पल खुद के लिए जो बताया, जो उसका विचार बदला बॉडी को लेकर, कि शुरू में उसने बोला कि बॉडी मेरी नहीं है। जब उसको ये जानने में आया तो उसने बॉडी की टेक केयर करना ही छोड़ दिया। फिर वो फर्दर वाइस पर्सन के जब टच में रहा तब उनको ये पता लगा कि बॉडी आपकी नहीं है, लेकिन बॉडी को ख्याल तो रखना है। तो ये उसका फर्दर उस कॉन्सेप्ट में एडिशन हुआ और इस तरह से उसकी नई एक धम्म संज्ञा बनी। देन कमलप्रीत जी से हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने जीवन के प्रति जो उनकी समझ थी उसको हमें बताया। और उनका ये कहना है कि उन्होंने जो उनका अनुभव है कि आप अपने आप पर ही हमें काम करना चाहिए। वन शुड वर्क ऑन अवर सेल्फ। किसी दूसरे के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए कि उसको सुधार दो, क्योंकि दूसरा अपने आप को कभी गलत मानता ही नहीं, वो सही रहता है। तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपने ऊपर काम करें, दूसरे ऊपर काम ना करें। तो इसको मैंने फर्दर पूछा भारती आंटी से कि इफ शी हैज एनी कमेंट टू मेक। तो भारती आंटी ने एक ऐसा एग्जांपल दिया जो उनके कलीग का था, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। तो उनको एक कलीग के बारे में ऐसा कुछ हुआ कि वो बहुत ही निगेटिविटी फैला रहा है और बाकी लोगों पर भी बैड इन्फ्लुएंस है। तो उनके मन में एक ये ख्याल आया कि इस पर तो काम नहीं कर सकते हैं, इसको निकाल ही देते हैं। देन उनकी समझ समहाउ एक थॉट और आया कि एक बार बात करके देखते हैं, मे बी he can or she can change। तो उन्होंने उस थॉट को लेके आगे बढ़ी, उससे डिटेल में बात करी और इवेंचुअली शी वाज सक्सेसफुल। तो फिर अभी क्या हुआ कि कमलप्रीत जी और भारती आंटी के दो एग्जांपल्स आ गए, जिसमें एक में कहना था कि हमें दूसरे पर क्या करना है वो सुधरने वाला नहीं है, और एक आंटी का था। तो फिर उसमें एक अंडरस्टैंडिंग फर्दर जो डिस्कशन हुआ उसमें ये भी हुआ कि जो कमलप्रीत जी का एग्जांपल है वो हो सकता है क्लोज रिलेटिव्स का हो, जिनके साथ आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जिनके साथ आपको पता है कि थोड़ा इमोशनल है और नहीं सुधर सकते, और उसकी वजह से। और भारती आंटी के जो था वो था कलीग वाला केस। तो उस तरीके की हमारी एक सेटलमेंट जैसा हो गया कि हाँ ठीक है, ये हमारी समझ इस लेवल पर ऐसे ऐसे चलती है। और शायद मैं भी उस लिमिट शायद हमारी क्षमता नहीं होती। कोलिग्स इंटरेक्शन है तो वी कैन एग्री टू और वी कैन वर्क। अगर मतभेद है भी तो भी वो इफेक्ट नहीं। और फिर लेटर ऑन गार्गी जी ने ज्वाइन किया। तो गार्गी जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए वो उन्होंने विचार व्यक्त किए जो आजकल विभिन्न पंथ है, उनका जो कहना था कि वो शी इज अ काइंड ऑफ सीकर। तो जैसे कि वो ब्रह्म कुमारी उन्होंने ज्वाइन किया, वहां पर उन्होंने कुछ अंडरस्टैंड था, वहां पर उन्हें कॉन्सेप्ट मिला, इनका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ा। तो जब उन्होंने विपश्यना किया तो वहां पर कोई हाथ पकड़ने का नहीं लगा, तो उनको लगा कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, यहाँ पर तो कोई है नहीं जिसकी मैं शरण जाके आगे बढ़ूंगी। तो फर्दर क्लियर हुआ दिमाग में कि कर्म है, हम सुखी या दुखी होते हैं, बाकी कोई तीसरा नहीं है। तो ये उनकी समझ बन गई। तो ये उनकी विभिन्न प्रकार की हर स्टेज पे समझ बन रही है। तो उसको हमने जब कंक्लूड किया इस चर्चा में, तो वैभव ने इसको फर्दर ऐड किया कि ये भी जो समझ है, जैसे एक समझ पहले बनी, एक समझ आज बनी है, तो जो भी समझ बन रही है उस पर चिपकाव नहीं कर लेना है, उसको लाइटली होल्ड करके रखना है और हमें उसको एक्सप्लोर करते जाना है। तो इस प्रकार मतलब जीवन के दूसरे मैंने एक छोटी सी बात और भी ऐड करी थी। जैसे मैंने दलाई लामा का एग्जांपल दिया था कि जब भी मैं उनको सोशल मीडिया पर उनके मैसेज देखता हूँ तो आई फाइंड कि उनकी एक समझ है करुणा, कि जीवन को करुणा के साथ जीना है।
तो वो मुझे काफी इंस्पायर करता है, और मैं कई बार अपनी समझ को उसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं उनके जैसा सोच पा रहा हूँ। जैसे कई बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ पॉलिटिक्स को लेके या कुछ को लेके, तो मैं देखता हूँ कि दलाई लामा तो उनको तो तिब्बत से भगा ही दिया गया, और फिर भी ही इज स्माइलिंग, एंड उनकी स्माइल ही कितना उनके शत्रुओं को इरिटेट कर देती होगी। तो आई फील कि ये भी अच्छा है कि हाउ टू स्टे कंपैशनेट, मेरी समझ है, और मैं कोशिश करता हूँ कि कोरिलेट करूँ दलाई लामा जी से या फिर बुद्ध भगवान की शिक्षा से। और सिमिलर व्यूज आंटी के भी थे, भारती आंटी के भी यही थे कि अंगुलीमाल का एग्जाम्पल देखो, भगवान बुद्ध ने कैसे उसको चेंज किया, और कोई होता तो भगा ही थे। इस डायरेक्शन में डिस्कशन हुआ। Okay. Darshan, can I maybe request, आज हम थोड़ा अलग फॉर्मेट ट्राई करें, if I can request you to maybe provide feedback group by group, that might be more helpful from a learning point of view, और क्योंकि आज समय भी है, if you feel appropriate आप देख लीजिए। ओके सर, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किसको धम्म संन्यास, क्योंकि वो अभी से दे आर मिक्स्ड अप, सो इसको डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि हम हमारे जो विचार हैं उनके प्रति हमारी धारणाएं क्या हैं। अगर हमारा विचार है कि कोई गुरु होना चाहिए जिसके प्रति हमारे को डायरेक्ट श्रद्धा हो और वो हमको गाइड करे, तभी हम मुक्त हो सकते हैं, तो एक ये विचार है। तो फिर हम उस विचार से प्रेरित होके एक पर्टिकुलर डोमेन में अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे। इसको ये लगता है कि नहीं हम आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मुझे किसी पे विश्वास नहीं करना, जब तक मेरे समझ नहीं आएगी मैं नहीं मानने वाला। देन दिस इज अ थॉट, दिस इज अ विचार है ये कि भाई हाँ, हमको जब तक चीज समझ में ना आ जाए तब तक हम किसी को विश्वास करने वाले नहीं है। इसलिए मुझे शरण वरण तभी लेनी चाहिए जब मेरे को सारी चीजें उसकी पढ़ाई समझाई हुई सारी चीजें बिल्कुल ठीक लगे, then I can try to take him as my teacher, not otherwise. Now these are the thought processes which I myself gone through. Because I met so many people in the initial phases, 70s, I couldn't come to terms with it because I found I had some perceptions. Teaching should be rational. उसमें ऐसा डायमेंशन ना हो जो कि मतलब कहे कि ये तो आपके बस का नहीं, ये तो बड़े लोग ही समझ सकते हैं, तो फिर तो then what can I do about it and so on. So कुछ धारणाएं बन जाती है हमारी, जैसे अध्यात्म के बारे में कि ये चीज ठीक है। कोई कहता है कि ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, आप भक्ति करो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, ईश्वर कहाँ है, और क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर ईश्वर है तो सारी जगह इतना दुख क्यों फैला हुआ है। अब उसका कोई जवाब नहीं दिए सेटिस्फैक्ट्री, सो यू जस्ट रिजेक्ट दैट होल पाथ एंड यू से नो दिस नॉट फॉर मी, समथिंग एल्स। सो दे हैव वेरी, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारी परसेप्शंस हैं, वो इन चीज़ों के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण। सो वी शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई दोस परसेप्शंस, बिकॉज इफ यू टेक एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल देन वी मे गेट लॉस्ट इन द wherewithal of the specificity of that person. He's not behaving well or he's behaving well or things of that kind. Now what is my expectation from people? Suppose I say मैं उसी जगह काम करूंगा जहाँ के सब लोग ईमानदार हैं, मैं ऐसी जगह तो काम ही नहीं करूंगा जिसमें कि अकाउंटिंग में गड़बड़ हो रही है। then I have a particular perception, this kind of organization is good to work, and then it will affect my life so strongly. Then it may be a perception, तो थोड़ा बहुत तो चलता है यार, ऐसे तो ठीक नहीं चाहिए, ऐसे कैसे काम चलेगा, if I am too strict about it फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। then okay, I'll see now what is that थोड़ा बहुत, that is our relative perception, मेरा कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, and we know the consequences of that also. So जो हमारे विचार हैं, जो हमारे mental concepts हैं, जिनके अब एक strong issue हमेशा रहा है हमारे साथ कि शाकाहार और मांसाहार, these are two very important, they are conflicting opinions. We find Buddha is teaching something, our own perception something else. Then what do we do? How do we go? How do we negotiate it? You can see it, how much dilemma can occur in attachment to these concepts. So we have to see the importance of in this domain. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी हमने thoughts के बारे में, तो जो हमारे मन में प्रोसेसिंग होती है वो सब चीज़ की प्रोसेसिंग होती है, thoughts about objects, about sound, about smell, about taste. Now all that we already discussed and categorized it separately as Rupa Sanya, Saddha Sanya and so on.
So we don't need to mix it up as far as possible, and therefore focus on what are the concepts or what are the teachings or about understanding of Dhamma or about understanding of society, that there should be equality in the society, and equality to ho nahi rahi, so you feel irritated and you feel this, and then therefore communism is best. So if there is no communism, then society is not good. So I'll have some strong opinions, and they will, attachment to that thought process will result in my behavior in a different manner. With the people who are not believing in that and with the people who believe in that, सारा behavioral pattern change हो जाएगा. तो मुख्य बात हम यही समझ रहे हैं कि भाई एक तो हमारी अटैचमेंट विचारों के प्रति, मेंटल कंस्ट्रक्ट्स के प्रति कितनी है, और उसके कारण, अटैचमेंट के कारण कैसे दुख होता है, और जो वो बनी है वो अनित्य है, अनात्म है. They have been formed by certain conditionings because of certain exposures or study or whatever is my past conditioning from carried over from past lives. So I recognize the arising of it and the cause for that purpose. Then I also recognize कि इसमें स्वाद क्या आता है, मजा क्या आता है. जब मैं विश्वास करता हूँ कि ये भगवान की टीचिंग ही बेस्ट है, तो उससे मुझे प्रसन्नता मिलती है, ग्रेटिफिकेशन मिलती है. कोई आके क्रिटिसाइज करता है और उसमें कुछ फॉल्ट निकाल देता है तो बहुत भयंकर परेशानी होने लगती है. तो मैं इस अटैचमेंट से कैसे बाहर निकलूं, तो मैं उसको ग्रैस्प ना करूं. मैं इसका मतलब नहीं कि ड्रॉप कर दूं, उसको ग्रैस्प ना करूं. आई कीप माई माइंड ओपन. मुझे मेरे टीचर ने इंटरप्रिटेशन दिया टीचिंग का, क्योंकि वो वर्ड शब्द है, उसकी इंटरप्रिटेशन एक ने ये दी और मैंने उसे ग्रास्प कर दिया. फिर किसी ने दूसरी इंटरप्रिटेशन दे दी तो मेरा सारा धरातल हिल गया. अरे ये क्या हो गया, ये तो कुछ और कह रहे हैं. Then I start hating that person, and then slowly and slowly my own experience changes, and I say, यार maybe that person was right. Then my perception changes कि नहीं, teaching is teaching का interpretation ये ठीक है, and now then I follow that and it affects my whole life. And then after some time I find, oh, that also is insufficient, and then again I reflect upon it. Now if I'm attached to it and are not willing to give up my clinging, then I stagnate, and then I become bitter, and then I might experience dukkha in a variety of dimensions. If I am open-minded, if I allow the attachment to relax the attachment, suffering decreases. But that of course means that I am having the ability to perceive the teaching as being given in a proper manner. So therefore, self-reflection, understanding the teaching in the light of my own experiences, ability to see that, those are the kind of things which will determine if I am open-minded, whether my perception about a teaching is right or wrong. And this perception about teachings will be a Dhamma Sanya. So that's how we can understand it. That's how I understand it. दरअसल अभी जो स्पेसिफिक पॉइंट था इस ग्रुप में कि दूसरों को करेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना, उसमें they try to separate it in terms of if it's a family member then don't do it, if it's a professional colleague then do it. So maybe why don't you throw light on this issue of intervening in other people's lives? That also is a perception कि हमको दूसरों को सुधारना चाहिए. एक परसेप्शन है पहले मैं सुधर जाऊं फिर मैं दूसरों को सुधारूंगा. People have different perceptions, and we can see the consequences of that perception का consequence है. अगर हमारी उसके प्रति attachment है तो हम बिल्कुल दूसरी बात सोचेंगे ही नहीं. Attachment नहीं है, if you hold it lightly, then we are open to the possibilities of other kind. Now, whether family people should be taken care of or whether others should be taken care of in the organization, those are matters of detail which we learn from our experience. It depends on the family members, depends on the organization. And so we can't, I mean, if we have a strong perception of one kind or the other, then we attach to it and then we refuse to do what may have been necessary. So the attachment to perceptions of particular kind, we can see that it is arising. Firstly, that why is that perception? इसलिए कहा कि उसकी उत्पत्ति को जरूर समझना चाहिए. Perception की उत्पत्ति not in the absolute sense which is due to person, which also is important, but due to my conditioning. कैसे मैंने ये conditioning बना ली, तो हम पाएंगे कि वो इसलिए बना दी कि उसमें प्रेय है, वो gratification मिलती है. इस thought process से अब मुझे ये लगता है कि मैं दूसरों को सुधारूंगा तो सिरदर्द है,
so forget about it, अपने को सुधार लो. So that gives me satisfaction, that gives me gratification. And then I realize कि मेरा बेटा तो मेरी बात ही नहीं मानता, अब मैं उसको सुधारूं या नहीं सुधारूं, मेरा तो perception है कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए. Then you get into trouble. That perception of mine is now causing me suffering. Then I have to rethink and reassess and change. If I am open, then I reassess and see. No, I think I need to develop a middle way of understanding. So वो perception को change करने वाली बात है. तो perception हम change इसलिए नहीं करते कि attachment हो जाता है perception से. तो वो अगर हम attachment ना रखें, then remain flexible in the light of our own experience, leaving aside, because everybody's experience is unique. हम किस तरह के लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, वो हमारे पुराने कर्मों का असर है, and they are not same for different people. So a generalization of that kind may not be desirable really. कि organization में तो करना चाहिए और घर में नहीं करना चाहिए, other way around. That cannot be a general policy. It has to be specific to the situation which I am facing. That's my understanding. Does it make sense? That group people may kindly give feedback, it will be helpful. Yeah, definitely. It does help a lot clarifying the understanding. At least for me. Thank you. Now let's see the group 2. सर हम 4 थे ग्रुप में, दीपक सर, जेके शर्मा सर, दीप्ति जी. So for some reason I will try to explain, but दीप्ति जी अगर मैं कहीं मिस कर जाऊँ so please intervene. तो मोस्टली डिस्कशन तो हम ये जो आज का टॉपिक है उसको ही समझने में हमने लगाया कि आज का जो टॉपिक है हम किस मतलब धम्मा संज्ञा को समझने में, उसको डिस्टिंग्विश करने में टाइम स्पेंड किया, जिसमें दीप्ति जी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए और दीपक सर ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए. तो दीपक सर ने मैथ्स के प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट पे अपना एक एग्जांपल दिया कि उनको कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है और सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो उससे उनको दुख होता है, और कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई तो अच्छा लगता है. तो इस तरीके से उनकी एक धारणा बनी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं वो अच्छी हैं, जो सॉल्व नहीं होती वो बुरी है, दुखदायक है. उसके बाद जेके शर्मा सर ने कहा कि धम्म संन्यास से उनको काफ़ी तकलीफ, काफ़ी अटैचमेंट है, जिस वजह से उनको काफ़ी दुख महसूस होता है आए दिन. और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो आते हैं और अपनी बातें बोलते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में वो नहीं है, तो सीधा उनका एक कंसेप्ट जाता है कि ये व्यक्ति तो सच नहीं कह रहे हैं और क्या ये नॉनसेंस बात कर रहे हैं, जो मैं देखा हूँ, जो मैंने ग्राउंड में देखा है वो सही है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो इसकी वजह से उनको काफ़ी दुख या तकलीफ होती है इस संज्ञा की, इस तरीके से इस आइडिया या इस विचार की वजह से उनको काफ़ी तकलीफ होती है. एंड दीप्ति जी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जैसे मैंने कुछ एग्जांपल शेयर किया और जेके शर्मा ने जो एग्जांपल शेयर किया वो आई थिंक ज्यादातर रूप और शब्द संज्ञा पे आधारित जो कंसेप्ट था उस पर. फिर दीप्ति जी ने हमको एक काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ओपिनियंस कंसेप्ट जो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर है, उस पर हमको डिस्टिंग्विश करके अपने एग्जांपल शेयर करने हैं. फिर उन्होंने अपने एक एग्जांपल शेयर किया कि जैसे उनकी फैमिली में जो फादर साइड है वो प्रोफेशनल्स थे एंड मदर साइड वो बिजनेस में थे, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक धारणा बन गई थी कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है वो जॉब अच्छी नहीं होती, गवर्नमेंट सर्विसेज की जॉब ठीक नहीं होती. तो इसकी वजह से उनकी बिहेवियर, तो जो एक विचार बन गया था, कहीं ना कहीं बिहेवियर पे काफी इम्पैक्ट किया था. दीप्ति जी का नॉट रॉन्ग, ये एग्जांपल था. तो काफी समय लगा उसको उससे निकलने में, और ये कई समय तक प्रॉब्लम रही. तो जब भी वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखते थे या गवर्नमेंट सर्विस या इस तरीके की चीजें जॉब्स को देखते थे, तो ये जो धारणा बनी थी वो ट्रिगर होती थी और उससे कहीं ना कहीं बिहेवियर में इम्पैक्ट होता था.
एंड दीपक सर ने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का ये इस तरीके से बताया कि बचपन से उन्होंने ये सुना हुआ है, बट बहुत सारे लोग इस पे यकीन नहीं करते हैं, तो इस पे उन्होंने बताया, जो कि मुझे सही तरीके से भी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो बट इस पे मेरा एक क्वेश्चन ये आया था कि ये सारे कंसेप्ट आइडियाज जो भी बनते हैं, तो इसका कुछ तो आधार रहा होगा, रूप संज्ञा आधार रहा होगा, जो मैंने रूपों को देख के अनुभव किया, शब्दों को सुन के अनुभव किया, किसी की लाउड वॉइस, शाउटिंग वॉइस, किसी मतलब एक मॉम को देखा एक बच्चों को डांटते हुए, तो वो इम्प्रेशन पड़ा और उसमें एक धारणा बन गई कि मतलब वहीं पे मैंने फादर को देखा कितना अच्छे से पैम्पर कर रहे हैं अपने बच्चों को, बड़ा टेक केयर कर रहे हैं, बच्चा गलती कर रहा है तो भी उसको बड़े प्यार से समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं पेशेंस के साथ। बट मैंने दूसरे ऑन द अदर हैंड आई सॉ mothers are not like fathers, they are different as per what I have seen in childhood. तो मेरी एक वहां से एक धारणा बन गई कि fathers are better than mothers. I mean, तो I think इस तरीके से मैं थोड़ा समझने की कोशिश की, I could be wrong. So this was the overall summary, sir. And any other member would like to add or do some editing or contribution? प्राइमरीली हम लोग एक्चुअली यही समझने की कोशिश डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे थे कि धम्म संज्ञा क्या है और डायरेक्टली एक्सपीरियंस धम्म ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड वर्सेस जो बाकी 5 सेंसेस हैं उनसे उपजा हुआ धम्म, उनसे उपजा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है और उसके बेसिस पे फिर जो धम्म संज्ञा बनती है सेकेंडरी लेवल पे वो क्या है. सो आई डोंट थिंक वी वर वेरी क्लियर अबाउट इट आवरसेल्व्स. जैसे मैंने निवेदन किया था कि माइंड की डुअल रूल है, इस कारण से ये कंफ्यूजन हो सकता है. एक रूल है कि जो 5 इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग भी बाद में माइंड में होती है, बट उसकी प्रोसेसिंग का कंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ आवर डिस्कशन फोकसिंग ऑन दैट इज रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा एंड ऑल दैट. They are also thoughts which we form, perceptions which we form. They are processed in the mind only, but we are distinguishing them. We are trying to distinguish them from pure thinking process. मैंने जब तिक पठान बताया था ना, तब भी हमने बात की थी माइंड के 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. माइंड एक तो जो 5 इंद्रियों ने देखा उसको अल्टीमेटली माइंड में प्रोसेस होता है, दूसरा है जो प्योरली माइंड की थॉट प्रोसेस अराइज होती है. So we are discussing the thoughts which arise in the mind, which will obviously have certain bases. जैसे वाक्यों की कंडीशनिंग की बेसिस है कि हमारे घर में बचपन में हमने देखा, हमारे सुना माता पिता से, या पढ़ा हमने ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ पे ये बताया जाता था कि भाई the socialism is the best way of living and therefore society should be arranged. या मैंने कहीं प्लेटो पढ़ लिया, उसके नाम प्लेटो के जो डायलॉग्स हैं वो पढ़ लिए, and I get deeply impressed by them and I say नहीं, जो wise people हैं, the philosopher should be the king and democracy is useless. Then I form that opinion, and then when I look at democratic functioning, I say, yeah, I see Plato is right, because I have that thought and I can see the malfunctioning of democracy and I can say, see, he was right, philosopher should, only the wise people should be the rulers. ये सब बकवास है सब, and that has an enormous impact on the mind. So these are the kind of thoughts, concepts which we imbibe in the same way as we imbibe thoughts about things and thoughts about sounds, और विचार हमारे बनते हैं साउंड के बारे में, साउंड के बारे में जो विचार बनते हैं उसको कहा सद्ध संज्ञा, जो स्मेल के बारे में या टेस्ट के बारे में बनते हैं उनको कहा रस संज्ञा और गंध संज्ञा, और धम्म संज्ञा कहा जो विचारों के बारे में हमारे परसेप्शन बनते हैं. तो उस सेंस में उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, क्योंकि विचारों के जो परसेप्शन है वो बहुत टेनेशियस होते हैं, उसको ड्राइव करना बड़ा मुश्किल होता है. Unless one is really open-minded, you can see that happening. For generations, people have the same thought process because it is transmitted from father to son and in the families.
So the impact of them is very strong. For example, the perception, that this kind of teaching of Buddha's teaching, this process is the right one, everything else is wrong. How much impact it has in our lives. We preclude ourselves. जब भी हम किसी ने कहा यार तुम अच्छा चलो छोड़ो, you are right, जरा ये सूत्र पढ़ लो, अब वो पढ़ा तो उसमें कुछ और नजर आया, नहीं ये समझ नहीं आता, ये हमको समझने की जरूरत नहीं है, जो मेरा टीचर कह रहा है वो ही ठीक है, finished. This is the way practice should be done. Now that's it. Perception about a teaching. We have formed a perception, interpretation, and we will stick to that interpretation in the face of evidence. Trained, we refuse to see the evidence. ये तो सब फिलॉसफी की बातें, थॉट्स की बातें, ये इसको क्या महत्व देना, आप प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप हो जाएगा. तो दैट्स इट. एक विचार है वो, क्यों, उसका कोई बेसिस है कि हाँ शुरू में फायदा होता है, उसका बेसिस भी है, but then we have become close-minded. We're not seeing it. Now that's what is a very dramatic example of attachment to a particular perception of a teaching of Dhamma. जो भगवान ने कहा था ना, धम्मे अधम्म सन्नी, अधम्मे धम्म सन्नी. That's a typical example of it. You misinterpret teaching and then hold on to that. And you can see the consequences of it. You can get into all kinds of complications. I can get into wrong estimation of myself. No, I'm already liberated. ये तो ठीक है, सब समझ आ गया, मुझे तो सब कुछ हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया. And then you know that it's not true. Ultimately, somebody, you remember, for example, Bahya Sutta. Imagine a person like him who has such huge following, and in his dream a devata coming and telling him, "You are not Arhant, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो, जो तुम साधना अभी तक जीवन भर की है वो तो useless थी." No, what does one do? Or the Kashyap brothers, Uruvela Kashyap and the Gaya Kashyap and Nadi Kashyap. भगवान जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ इसके पावर है, but he's not liberated like I am. He keeps on holding to that perception again and again and again and again. Ultimately, Buddha has to tell him, you have a mistaken notion. You don't even practice according to the way which is. Then he begins to, because his resistance has been softened already by seeing that's why Buddha does those kind of psychic power display to him. उसका resistance soften हो जाता है कि ये बंदा कुछ है, लेकिन मन में भाव यही है कि है तो बहुत powerful, लेकिन उतना नहीं. And then when he finally tells him this is the path to freedom from extinction of suffering, राग अग्नि है, द्वेष अग्नि है, then he begins to think, हाँ यार ये बंदा शायद ठीक ही कह रहा है, and he is willing to listen, and immediately transformation happens. So the attachment to the teaching is such a strong binding to us, which prevents us from, because this is basically the same thing, which Buddha talks, two kinds of fools. Those who say, take teaching, the right teaching, and say it's not right, and those who say, which is wrong teaching, say this is right. They are the two kinds. So that has this, you can see how strong influence it has on us. So these are the kind of abstract kind of concepts of कह लीजिए उनको विचार कह लीजिए, समझ कह लीजिए, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं. तो मेरी समझ बनी हुई है इस तरह की कि सभी को इस तरह की विचारधारा रखनी चाहिए. जो मेरी विचारधाराएं हैं, खासतौर पर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, these words convey so much. There's a whole history behind them. History behind socialism, history behind communism, history behind democracy, history behind plutocracy. उनकी इतना पूरा उसका एक क्या कहते हैं शास्त्र है, एक पूरा फिलॉसफी है. जैसे नाइत्सी के बारे में मैंने कहा, उनको स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि ये क्या है, ये कंपैशन और काइंडनेस, ये सब तो दे आर वीक पीपल्स मॉरल. दीज आर नॉट व्हाट वी शुड फॉलो. ये करने योग्य नहीं है, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द लॉ ऑफ नेचर. वो ऐसा नहीं, वो पागल था. He interpreted science in that manner, and therefore he formed up, and it had dramatic influence. Millions of Jews were massacred in the attempt to get a new race.
So you can see the impact of that. So we're discussing that. Sorry, थोड़ा ज़्यादा हो गया है. Third group, please. Sir, in our group, Bhante ji the. Sonal, sorry, since we are very short of time, maybe if you just point out that area जहाँ हमें दिक्कत थी, maybe that might be helpful. है ना, वो जो behavior वाला था ना, जी. जो आंटी जी का था, that might be helpful, है ना? जी. Apart from all the examples, हमने ये discuss किया कि अगर कोई harsh या harsh नहीं मतलब थोड़ा अगर जोर से बोलते हैं और उस पे अगर हमारा परसेप्शन है कि हमारा चित्त की चेतना अच्छी है, बट हमारा बिहेवियर इसी तरह से है, मे बी बिकॉज ऑफ प्रीवियस कंडीशंस या जो करियर था या उस वजह से, तो उस धारणा पे उसका चिपकाव कि ये मैं तो सही हूँ बट सामने वाले को कैसे भी लगे, तो उस पर डिस्कशन हो रहा था. तो इसका कंक्लूजन ये सर ने भी शेयर किया था कि लैक ऑफ माइंडफुलनेस टुवर्ड्स द फीडबैक. और सर इफ यू कैन इलॉबरेट, आपने कहा था कि सती 2 टाइप्स की होती है, अज्जता और बहिद्दा. उस वजह से हम अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं उस फीडबैक को, प्रॉपर नहीं ले पाते हैं कि सामने वाले को अगर गलत तो नहीं लग रहा है, तो फिर हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारे बिहेवियर को चेंज करने के लिए. ये डिस्कशन निकला था, apart from other examples like attachment to the rituals and all. In terms of धारणा, it is basically ये हमारी धारणा बनी हुई है कि बस चित्त की चेतना बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. That is the धारणा, that is the perception we have formed कि मेरे चित्त की चेतना जो कैसी है वो ठीक होनी चाहिए, बाकी जो है वो तो सब दूसरे की, that is others problems, not my issue. Now that's a strong belief system, that's a belief in a particular thing. सिर्फ चित्त की चेतना important है क्योंकि उसी से कर्म बनता है और बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता. But that if you see that is attachment to that kind of perception कि चित्त की चेतना ही सुप्रीम है, बाकी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता. That's the way we get attached to a particular thought. Teaching is understood in a wrong manner because बार-बार feedback आ रहा है and you are ignoring it, which shows that it's not only the chetana, there is need for compassion, there is need for maitri, there is need for other factors also. वो भी हमारे लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं. अगर हम अनजाने में किसी का नुकसान कर रहे हैं और उसके फीडबैक को ऑनर नहीं कर रहे हैं, तो this is showing our arrogance, this is showing our lack of understanding, and we are not trying to really reflect on the limitation of my thinking. जो मेरा perception बना हुआ है उसकी limitation को मैं नहीं देखने को तैयार हूँ. That's a strong attachment to this perception कि चित्त की चेतना ही important है, everything else is not matter. तो वो एक हमको उसको मॉड्यूलेट करने की जरूरत है. भगवान की टीचिंग में भी आता है कि सती जो है अज्जता और बहिद्दा होनी चाहिए. We should see with respect to ourselves and with respect to outside. That's also important from the point, not only from the point of view of Sangha or not only from the point of view of society, but ultimately from my own point of view, by raising the sensitivity level. मेरी sensitivity बढ़ेगी नहीं. I will remain always self-centered. Just अगर हम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में मेरे कर्मों का दूसरे पे क्या असर हो रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं totally, then that is a lack of sensitivity. So which means the perception जो है हमारे जो धारणा बनी हुई है कि compassion के बारे में हमारी धारणा बड़ी limited understanding है, वो ठीक धारणा नहीं है. So we have to really see how we hold on to certain perceptions. In this particular case, the perception that Chetana is supreme is being held in a manner which is not, which is true but not right. Okay, let me put it that way. So some things, some perceptions may be in some senses right in a sense, Dharsad. लेकिन the issue is कि उसके प्रति मेरा रवैया क्या है, किस तरीके से मैं उसको पकड़ रहा हूँ. तो वो गलत तो नहीं है ना, टेक्निकली तो वो बात गलत नहीं है. बिल्कुल टेक्निकल तरीके से मैंने कहा it is true but not right. Chetana is of supreme importance, is true,
but in our, it's not being understood properly. It's not being understood properly because the impact of the teaching is, what is the teaching? कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ, कायिक वाचिक मनसा, जो भी काम करने जा रहा हूँ, I should see whether it is for harming me or harming others. And if either of them is true, I should not do that work. Or if I have done it and found that it has harmed others, then I should make appropriate correction. That is the basic teaching in the Ambalakshika Rahulavada Sutta. And he says that is the way, only way by which you can purify the mind. So by holding on to one part of the teaching and not the other, by not having a comprehensive view of the teaching, we come to wrong understanding. Because you're grasping the teaching in a partially. कि चित्त की चेतना important है, ठीक बात है, but the impact of that on others also should be seen. Whether it is causing suffering to others. So otherwise, why is Buddha talking about harsh speech as breaking of Shila? कहते ना, सिर्फ मूसावादा वेरमणि नहीं है, विसुनाय वाचा वेरमणि, फरुसाय वाचा वेरमणि क्यों कह रहे हैं? Because the harsh speech is not helpful to the other, it hurts others. So we are actually in some way hurting others. So in some way hurting, when we say, of course, panati pata is seen in the sense of killing, but it can also be seen of hurting. So one has increased sensitivity. So we can see there is on one hand we say Chetana is determining the Kamma, on the other hand we also say the speech and should be of this particular kind. He's not saying कि चेतना आपकी अच्छी है तो आप कुछ भी बोल दो, कैसे भी बोल दो, ऐसा नहीं कह रहे. So the precepts themselves are great check on that. So we are ignoring those things. When we stick to one part, that's why I said, when you take, आप धम्म का एक aspect पकड़ के उसको grasp कर लें, बाकी को छोड़ देंगे तो इस तरह का confusion होने की संभावना है. धम्म में चेतना वोल्यूशन तो है ही है, बट शील भी है, समाधि भी है, एंड संकल्प भी है. So all of them have to be really seen in totality, and then our behavior with the world will be of a different kind. Then the suffering will fall down. Basic सारा idea क्या है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि दुख कम हो, हमारा भी और हमारे कारण दूसरों को मिलने वाला दुख भी. यही आइडिया है ना बेसिकली, दुख मुक्ति की बात हो रही है. So with that objective, if you evaluate everything, then things become clearer. Then we can see where the problem is arising. Is it arising due to lack of understanding, or is it arising due to, most of the time it is due to grasping of something or the other. Does it make sense, or अभी कुछ clarity नहीं आई? You can reflect upon it in the evening. अगर कुछ और आवश्यकता हो, you can discuss it. That's what the main issue is, to be able to locate कि what is the thinking in this context. ना जो धम्म में वहाँ दिक्कत हो रही थी. I mean, one is the concept जो आपने समझाया, वो तो खैर at least for me that's okay. But it's difficult to get hold of. जैसे दीप्ति भी कह रही थी ना, what really are we looking for in the category of Dhamma Sanya? I think that's still, at least for me, it's still shaky. We are looking for what is the thought process behind whatever we are doing. Okay? कि हमारी कैसी धारणा है जिसके आधार पे हम एक परसेप्शन के हिसाब से हम अपना बिहेवियर हमारा मॉड्यूलेट हो रहा है. जैसे ये एक टिपिकल एग्जांपल थी जिसमें डिस्कस नहीं हो पा रहा था कि क्या थिंकिंग है. इसमें थिंकिंग ये है that you are grasping the fact that Chetana is of the paramount importance. You're just grasping it without looking at other aspects of Dhamma. So the thinking is the
this issue of Chetana being paramount, and then the Everything else can be neglected. that is the fundamental thought. Yeah. Huh? Yeah. Behind that behavior. Yeah. Like behind rejecting the feedback. So And- that is the sanya. ये जो आपने भी statement बोली, this is the sanya. This is the Dhamma Sanya. Thinking that Chetana is supreme and everything else does not matter. So now, in and of itself, this Dhamma sanya is actually okay. Now the difficulty starts when I really hold it very tightly. Yes. And I neglect the comprehensiveness of Dhamma. You see, there's a comprehensiveness of Dhamma in terms of suffering, freedom from suffering. So we have to see if you go to the base of it, if you penetrate deeper into the mind, why am I holding on to this belief process? Why am I grasping this? Then if you investigate that, then you'll find out behind that is the refusal to correct my behavior, refusal to respond to my speech, change my speech, or change my actions. That is behind it, because I want to justify my particular way of speech, particular way of action. That's it. So aswadan is ke in a sense मजा आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ. I'm not seeing the danger in it. I'm not seeing the danger in that attachment. And because I have a feeling, oh, मेरी चेतना शुद्ध है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता. Everything is fine. So that gives you my satisfaction. That gives me satisfaction कि मेरी चेतना तो ठीक है ना. So that gives me satisfaction. And the danger involved in that is not being seen. That this is preventing me from correcting my speech, from correcting my actions, and from correcting, for example, the not seeing properly the other defilements which are there in the mind, because that can prevent you from seeing everything else. There can be subtle latent tendencies which you are not able to see, because you have such a strong confidence कि चेतना तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है. And don't realize कि उसके अंदर अंडरग्राउंड में latent tendency छुपी हुई है जिसके कारण वो justification दिया जा रहा है. Okay, so maybe we'll have more discussion on it. It would be good if you can put down in words some question, and then I can reflect upon them in the evening again, and we can get more clarity. Quickly listen to brief summaries from group 1 first. अभी रिकॉर्डिंग को ऑन कर दे. मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग पॉज हुआ है. राजेंद्र जी, अगर आपने स्टॉप नहीं किया होगा तो भी वो सेव हो जाता है फाइल. नहीं, मैंने तो कर दिया है. मैंने तो स्टॉप कर दिया, लेकिन इसमें लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्डिंग पॉज्ड. ये किसका, मेरा आ रहा है कि ये किसका आ रहा है? आप ब्रेकआउट रूम से बाहर आ गए ना. सॉरी, एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग ब्रेकआउट रूम में ऑफ नहीं किया था गीता जी. मैंने भी नहीं किया, लेकिन वो सेव हो जाता है. डोंट वरी. मैंने तो ऑफ कर दिया था. हाँ, ठीक है. लेकिन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्डिंग पॉज्ड, तो मुझे लगा कि ये जो सेशन हमारा ये वाला सेशन है ये चल रहा है ना. हाँ, ये तो चल रहा है. यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है. अच्छा, फिर ठीक है. फिर पता नहीं किसका पॉज हुआ है. भगवान. चलिए. ओके, तो डिस्कशन हुआ. लार्जली डिस्कशन वाज विद रिगार्ड्स टू पॉलिटिकल, गवर्नमेंट के लोग ऐसे हैं, या प्राइवेट ऑफिस, या सोसाइटी एज ए लार्ज. तो इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था. एंड पहला तो डॉक्टर अनुरागी जी ने बताया कि जब वो MBBS के स्टूडेंट थे तो उनको वो एक सकायदिती ऐसा था कि दिस सोसाइटी में जो पावरफुल लोग हैं वही पूरा कंट्रोल करते हैं, बाकी के लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट्स द पावर विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो धीरे धीरे जब उन्होंने कई सारी किताबें पढ़ने लगी थी, जैसे भगत सिंह की किताब, या तो वो समझने लगे थे कि ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग है. तो उनका वो एक, और उन्होंने टिपी तक भी पढ़ा था, तो लेकिन उन्हें उस किताब से उन्हें ऐसा ज्यादा वो कॉन्सेप्ट ये नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं कर पाए.
पर उन्हें थोड़ा बहुत ये उन्होंने उनकी एक धारणा बनी हुई थी कि दिस सोसाइटी इज रूल्ड बाय पावरफुल पीपल, तो वो धीरे धीरे वो चेंज होने लगा। जैसे जैसे वो किताब पढ़ने लगे और धर्म की किताबें पढ़ने लगी, वो सुनने लगे, तो उनका वो पूरा धारणा चेंज हुआ। और दूसरा उन्होंने एक उन्होंने बताया था कि किताबें पढ़ने से ही विजडम बढ़ती है, तो वो उनका एक पूरा एक कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था कि ऐसा नहीं है। तो सती पठान में जैसे कि 4 मेथड्स जो बताते हैं कि जब उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया तो उन्हें वो दुख बोध भी जगा कि ये पूरा एक परसेप्शन है कि जो मैं समझ रहा हूँ कि विजडम सिर्फ किताबों से मिलती है, ऐसा नहीं है। तो उनका वो एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, तो वो उसमें देख पाए। थर्ड थिंग व्हाट ही वाज स्पीकिंग अबाउट इट, कन्वेंशनल टू अल्टीमेट रियलिटी। So this is something which we need to seek clarity from you, sir. I have very less experience on this. I'll just say what he spoke. Like unable to sustain the ultimate reality. It is like hamesha you switch on to ultimate and then you come back to conventional reality. जब ये ऐसे वो देखते हैं और वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं अनित्य बोध, दुख बोध और अनात्म बोध की, तो उन्हें उसमें एक दुख जागता है और ये पॉसिबल नहीं है, तो उनका वो एक परसेप्शन भी उसके प्रति चेंज हुआ। So this is something which we need to seek clarity. Let's focus on those aspects where, so you can write it down as a question and then do you have any other question in the group? No, there are no questions. There was only discussions with how the perception changed, with the ideas and concepts, which was clear. more related to. They are clear. Yeah, those are clear. Like, government people will be like this, or corruption hota hai government mein, private mein nahi hota hai. So then the perception changed that, it's all government sectors are not very bad. Basically, largely private sector mein bahut corruption hota hai. तो वो एक कॉन्सेप्ट था। सेकेंड इज लाइक वी डिस्कस्ड ऑल्सो, शिवेंद्र जी ने बताया था कि कोर्ट में जाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वहां पर उनकी एक अलग ही धारणा थी कि एडवोकेट्स आर लाइक दिस। सो जब अब वो लॉ स्टूडेंट है तो वो जो उनका जो धारणा था वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। सेकेंड, उन्होंने ये भी बताया था धर्म के प्रति कि वो बहुत सर्च करते थे कि उनको धर्म में आगे चलना है, पर उनको ऐसा लगता था कि जेन मेडिटेशन और अदर, उन्होंने काफी और भी मेडिटेशन ट्राई की थी, तो उनको लगता था कि ये सब पैसा कमाने का चीज है, इसमें कोई मतलब असली धर्म तो जो सेवा का भाव होना चाहिए। जब वो विपश्यना के संपर्क में आए तो उन्हें वो थोड़ी सी वो समझ आई थी, एंड नाउ ही डज नॉट लुक एट इट विद अदर स्पिरिचुअल थिंग्स हु टेक मनी, बिकॉज देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। एंड सूरी जी का वही था बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। So as we had said, we could focus on if there was any disagreement about any issue in the group, and if there are any issues which are not clear, ताकि समय बनते तो बहुत देर हो जाती है रोज ये just doing. So there was only that last question which was, yeah. You can write it down and then ask me. I can take few seconds. I have one more point for consideration of the larger group. ये जो present conflict है यूक्रेन रशिया का, is it because of adherence to concept of insecurity by Russia कि NATO उनके नजदीक आ जाएगा, तो एक concept है उनके दिमाग में जिससे वो adhere करके अटैक कर रहे हैं? Will it come under this? I can't penetrate into the minds of Russian leaders and tell you क्या है उनका। नहीं, जो apparent धारणा उन्होंने बना ली और अटैक कर दिया, हमने तो can it come as there are so many multiple reasons, we can see them and make our own opinion about it. So many reasons are there. If you look at it from Russian side, they have certain reason. If you look at it from Ukrainian side, they have some other reason. So it doesn't really, it's not possible for, we can be aware of our perception. That itself will be a very big thing. So I would suggest that we focus on our perception here. We can discuss it between ourselves separately. You can call me and we'll discuss. I have no problem discussing it. Okay. So group number 2, please. जी सर, हमारे ग्रुप में भारती आंटी थी, पूनम जी थे, ललित जी थे और मैं था, यस इतने ही लोग थे हम लोग। तो
हमने बेसिकली प्रश्न तो हमारे में भी नहीं उठे, लेकिन बहुत ही अनुभव वाली बातें हमें पता चली, जो कि वक्त के साथ मेंटल धारणा उन्होंने डेवलप की है। भारती आंटी ने अपने पूरा अनुभव हमें बताया कि उनको जो एक उनका विचार है कि अगर बच्चे को सही वक्त पर पता हो कि उसे लाइफ में क्या करना है, तो उसकी सक्सेस की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये उनका स्ट्रॉन्ग विचार है और उनका ये कहना है कि उन्होंने जीवन में सीखा है, ऑल्दो वो उसे एडहेयर नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कि कई बार मौका नहीं मिलता। जैसे उन्होंने खुद को उन्होंने बोला कि 12वीं क्लास से ही उनको पता था कि उनको ह्यूमन एरिना में काम करना है, मनुष्यों की सेवा में। तो वो डॉक्टर नहीं बन पाई, नर्स नहीं बन पाई, तो उनको दूसरा एक्सपोजर मिला। उनके साथ कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी जुड़ी। तो ये बहुत ही ऐसा विचार है जो मैं मतलब इस फोरम के माध्यम से मतलब मैं कहना भी चाहूंगा कि दिस इज प्रीटी नाइस। और मैं तो टीचर हूँ, कई बार पेरेंट्स बच्चों को पुश कर देते हैं, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है, बच्चों से पूछते ही नहीं। तो आई डू एग्री विद दैट। एंड फिर पूनम जी ने अपना एक जिस विचार से वो जी रही हैं उसको हमारे साथ शेयर किया कि बचपन में अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी जल्दी गुजर गए। वो अपने पिताजी से बहुत प्रेम करती थी। तो एक विचार उनके पिताजी ने उनको हैंड ओवर किया कि फैमिली सब कुछ है, फैमिली को साथ लेके चलना है। तो शी सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर द फैमिली, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हर सिस्टर मेड हर रियलाइज कि हमें निखिल, सॉरी, मे आई अपने- इंटरप्ट यू? निखिल, सॉरी, जी। अगर कुछ स्पष्ट चीज हो ना, बिकॉज उनके पास है ना क्वेश्चंस पड़े हुए हैं थोड़े, है ना। Alright. सो आई थिंक उनका निवेदन था कि हम इस बार अपने डिस्क्रिप्शंस ना दें, हमने अभी तक दिए ही है ना। और अगर जी। कुछ स्पष्ट चीज हो तो हम उसको यूज करें ना, क्योंकि अब ऑलरेडी सिर्फ 25 मिनट बचे हैं, अब है ना। जी सर। So जी, if it's ठीक है। okay ना, है ना, we can do the sharing. So So- if there's something that there was Yeah. that you guys were not clear, then please go ahead and ask that. That might be Yeah. good. So maybe एक चीज पर शायद हम कंफ्यूज थे, पूनम जी के साथ हम एग्री कर गए थे। फिर जब ललित जी ने एक एग्जांपल बताया कि उनको बचपन में, क्योंकि वो पहाड़ में है, तो पहाड़ की शांति से उनको विपश्यना में हेल्प मिलती है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये इसको हम कैसे रिलेट करें। मतलब ये उनका विचार है या ये ध्वनि संज्ञा है जो उनको मेमोरीज में चली गई है? क्या मेमोरी और थंब संज्ञा में कोई कोरिलेशन है? यहाँ पर हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बाकी तो वी ग्रुप मेंबर वर इन कंसेंट इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। थैंक यू। ग्रुप 3। वैभव, तुम्हारा माइक बंद है। अनम्यूट करो बाबा। कंप्यूटर में चलो। No, Vaibhav, it's your laptop that's muted. No, not the. Yeah. Just a second, sir. So let Yeah. me. Okay. ठीक है। हाँ सर, तो हमारे ग्रुप में शर्मा सर, गार्गी जी और मैं था। और आई विल कम टू द क्वेश्चन, बट मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट से क्वेश्चन में आता हूँ। तो बेसिकली टॉपिक शर्मा सर के एग्जांपल से शुरू हुआ कि एक पर्सन के बारे में कोई एक निगेटिव प्रकार की संज्ञा थी कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, और वो पर्सन भले ही चेंज हुआ पर अभी भी उनके प्रीवियस संज्ञा के बारे में एक अटैचमेंट था। तो इसका रीजन उन्होंने बताया कि बिकॉज आई हैव दिस परसेप्शन कि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, बट एज वेल एज द एक्सपेक्टेशन कि अदर शुड बी ऑनेस्ट, इसकी वजह से वो संज्ञा की वजह से दुख हो रहा था। तो गार्गे जी ने भी अपना पॉइंट ऐड किया कि इसको कम करने के लिए इसका ग्रास्पिंग करना चाहिए और यू शुड फोकस ऑन द गुड। एंड द सेकंड पॉइंट व्हिच केम अप कि वी शुड फोकस ऑन आवर ओन डेवलपमेंट एंड नॉट बॉदर अबाउट अदर्स। सो टुवर्ड्स कंक्लूजन ये निकला कि परसेप्शन 1 था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, परसेप्शन 2 बना कि we should focus on our own development and not bother about others. तो ये perception 2 is helping to tone down the perception 1. perception 1 की संज्ञा की grasping को कम करने के लिए help कर रहा है, it's fine. But
यहाँ पे डिसएग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट नहीं हो पाया, एटलीस्ट मेरा और शर्मा सर का। तो शर्मा सर का कहना है कि किसी ना किसी परसेप्शन को पकड़ के चलना पड़ेगा, some perception has to be hold on to. So and my is ki okay, and functionally some perception has to hold on to, but even those functional perception need to be seen as impermanent, मतलब कभी ना कभी maybe वो भी change हो जाएंगे. So this was the disagreement. So if you could address. Sir, here I may say 1 or 2 minutes. Hello. Yeah, I did not say that perception को hold करके चलना पड़ेगा. I didn't say this thing. I only say that, now let me say my questions also again. That I have certain perception which I know are not right. They should move away. I should have been flexible. I know this thing. But the perception are based on my, for example, honesty part. This is first thing. Second part, leaders should be देशभक्त होना चाहिए, देश के प्रति। जो मैंने सीखा था कि भाई जो देश के प्रति नहीं है वो अच्छा नहीं है। लीडर्स ऐसा होना चाहिए, नौकरी वाला ऐसा होना चाहिए, टीचर्स ऐसा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स का ध्यान रखे। तो ये परसेप्शन कुछ जो बने थे, तो जो परसेप्शन टूटते हैं तब बड़ा खराब लगता है, ये जानते हुए कि दिस इज नॉट ट्रू, माय परसेप्शन आर रॉन्ग। आई नो दिस थिंग वेरी वेल. आई हैव नॉट टू होल्ड माय परसेप्शन इन ए हार्ड वे. आई नो दिस थिंग. बट इवन देन व्हेन दिस व्हाट्सएप कम्स और व्हेन आई हर्ड द न्यूज और समथिंग which is not according to my perception, I feel bad. This is the only thing which I am putting different groups. If you reflect, why do you feel bad? Because you are grasping those perceptions. Correct. You are clinging to those perceptions. Yeah. And we have to understand that clinging, whatever you cling to, will cause suffering. So irrespective of whether the perception is right or wrong, we don't get into that. That is a analysis from the basis of Panya. That is a different issue. But mere grasping of any perception, howsoever good it may be, will cause suffering. That is what Buddha teaches us in Anatta Lakkhana Sutta and everywhere. All the 5 khandhas are of the nature of anicca, dukkha, anatta. So if you attach to them, you'll suffer. So once I understand here, suffering meri iske karan ho gayi, then I'll loosen the grip of attachment on it slowly and slowly by reflection, by practice. That's how we work. इन सब बातों को सर I understand, know, but you have to practice. The things are remain at the same place. That is the only thing. Yeah, we have to practice. It's very right. It's not easy. I know कि मैं काफी grasping किया हुआ है जो नहीं होना चाहिए. हम किस तरह से वो practice कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी. How are we practicing releasing these perceptions? That is another dimension of practice. So we can discuss it. Okay. We discuss it here or discuss it later. Yeah. We can do it. But first thing is to recognize कि ये perception को grasp करने से दुख हो रहा है और इसलिए इसको release करना चाहिए. And then we see how it is causing, and then we have various ways of looking at it. What is the cause of attachment to it? And then we can try to drop that, because it is basic 4 noble truths. You are attaching to one of the khandhas. That's going to cause. Yeah. So Bhagavan ye kehte hain this tanha should be dropped. Yeah. Attachment should be dropped. Now, how do we drop it? By seeing the standard 4 noble truths की practice है वो करनी पड़ेगी. It won't happen just by intellect. You have to experience the suffering and then see what causes suffering and then release the attachment at that moment. यथाभूत जब वो घट रही है, suffering हो रही है, उसको देखते हुए उसको drop करेंगे, तब जाके वो फायदा होगा. So we can discuss it in detail later. Yeah. It's detailed thing. Thank you, sir. Thank you. Group number 4. ऐसा है कि हमने, क्योंकि हमारे साथ महापन्यो जी थे, तो भंते जी, तो उनके साथ बैठ करके मतलब हमने आपस में काफी अच्छी तरह से, so I think there is nothing which I can add. We had a wonderful discussion.
and we are clear in many of the things. Now we would like you to hand it over to you. Kindly proceed. Thank you. Oh. See, yeah, thank you very much. I'll make some general comments once again, because I think those are necessary in the light of the questions received. सबसे पहले एक कैविएट मैं पहले भी शायद रख चुका हूँ कि यद्यपि हमारे निकायों में प्राइमरी स्क्रिप्चर्स में इन 6 संज्ञाओं 6 वेदनाओं इन सब की चर्चा आती है, उसके आपस में डिस्टिंक्शन को इतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है और अनफॉर्चुनेटली कई जगह कंफ्यूजन भी है। एक जगह कुछ कहा गया, एक सूत्र में कुछ कहा गया, एंड मैनी कमेंटेटर्स हैव रिटन कि ये हो क्या रहा है। सो सम ऑफ देम हैव रिजॉल्व्ड दिस बाय सेइंग कि ओरल ट्रांसमिशन में गलती हो गई है, किसी ने गलत रिकॉर्ड कर लिया। आई मीन आई हैव सीन इट रिटन एक्चुअली इन अ रिसर्च पेपर। One very venerable scholar monk writes that it shows there has been this error in oral transmission because there are some things which are absolutely contradictory. You can't resolve them in any way. So we have to appreciate that part. तो इसलिए जो भी मैं अपनी तरफ से आपको निवेदन कर रहा हूँ, हर एक के बारे में, हर एक खंड के बारे में 6 हिस्सों में बांट के, वो मैंने अपनी समझ से बनाया है। इसका मतलब नहीं कि वो फुल प्रूफ है। यू कैन ऑल्सो इंटरप्रेट इट डिफरेंटली, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू संज्ञा। बाकी तो क्योंकि अनुभव की बात है, उसमें प्रॉब्लम होने की संभावना कम होती है। तो और उन सब संज्ञाओं में भी हमको समझना पड़ेगा संज्ञा का क्या भगवान ने बताया कैसे बनती है। रूप संज्ञा रूप के आधार पे बनेगी, शब्द संज्ञा शब्द के आधार पे बनेगी, एंड सो ऑन। और कोई तरीका नहीं है उसका। और संज्ञा क्या है? संज्ञा इज ए मेंटल फैक्टर, इट इज अ थॉट, इट्स अ कॉन्सेप्ट। Whether it is color, whether it is shape, whether it is music, they're all concepts. Now you can say all concepts of Dhamma. So then every concept is Dhamma Sanya. No, that's not the way we understand. The Dhamma Sanya is identifying Dhammas and then making a perception out of it. एक चीज मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 2 तरह के हमको संज्ञाओं को महत्व देना चाहिए। एक फंक्शनल, जिससे कोई उसका सामान्य जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे धर्म समझ में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। उसका इम्पैक्ट होता है उस संज्ञा के साथ जुड़े हुए इमोशनल एस्पेक्ट के, उसका बड़ा भारी असर पड़ता है। हम किसी संज्ञा के आधार पे किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, उसका फर्क पड़ता है। ऐसा ही होना चाहिए, वो अटैचमेंट होगी कि ये सबको सत्य बोलना ही चाहिए। I'm not saying it is wrong or right, please. I'm saying this is a perception, okay? Perception about an idea. All the cows are white. This is a perception. One may say cow is a mental construct. Yeah, it is a construct based on the basic elements. जैसे रूप की चर्चा हुई, जो 4 महाभूत है और उसके ऊपर डेराइव्ड रूप है, उसको रूप कहते हैं। दिक्कत जैसे मैंने पहले भी कहा था, रूप से हमने ट्रांसलेशन अधिकतर जगह फॉर्म कर दिया, वो ठीक नहीं है। रूप का मतलब मटेरियल है, मैटर। मुझे कहा था मैंने अभिधम्मा में मटेरियल फिनोमेना। जब वो रूप आँख के ऑब्जेक्ट बनता है तब उसको रूप इन द सेंस ऑफ फॉर्म कहना चाहिए, क्योंकि जो शब्द है वो भी रूप है, जो गंध है वो भी एक तरह का रूप है, डिराइव्ड मैटर है। तो इस कारण से कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है। अब जो धम्म संज्ञा है उसमें हमको डिसाइड करना है हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, बिकॉज देयर इज नो इंस्ट्रक्शन गिवन। नाउ यू कैन से दैट a human being is a mental construct, father is a mental construct, a cow is a mental construct. Everything is a mental construct. Reality of the ultimate reality of all rupas is 4 Mahabhutas. But that is not the appearance. That is the ultimate truth obtained by
penetration into the, according to Yoniso Manasikara. So that is moving from sanya towards panya. तो मैंने जो presentations की हैं आपके सामने, they have been based on mere appearances. What are the appearances and how we interpret them? Okay, so we have to see that it is a kind of restriction I have put, that we'll consider that ideas which are directly cognized by mind, thoughts which are directly cognized by mind, and the ultimate perceptions को भी अगर हम उसमें include करेंगे, then there will be a mix of sanya and panya, and we can get into some kind of a confusion. Okay, so ये basic मुझे निवेदन करना था. इसके बारे में अगर कोई doubt हो, कोई issue हो, you can please raise it now, because I think it is quite important. Probably there is some either my lack of clarity of my explanation or lack of clarity of the understanding. So please explain. कोई question हो तो आप बताओ जोर से करो. मटेरियल से क्या पदार्थ जी. Any question about this? About the tentative nature of definitions. Please see that. हाँ, next. आपने सर क्या बोला, रूप संज्ञा इज रिलेटेड विद मैटर, फिर आपने बोला कि ध्वनि भी कहीं ना कहीं रूप संज्ञा से रिलेट हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ध्वनि भी उसके लिए भी हमें वो चाहिए मीडियम. मैंने कुछ नहीं कहा, गलत समझ रहे हैं. तभी मुझे लगता है कि वो मेरे शब्दों में कुछ गड़बड़ हो जाती है. मैंने कहा in the ultimate sense, शब्द, रूप, गंध, रस, all of them are matter in the ultimate sense. But we don't do that. In our understanding of sannyas, we don't do it. We say this is different, this is different, this is different, this is different. Why? Because it facilitates our experience. That is the reason. तो मैं ये नहीं कहा कि वो वही है और इसलिए कंफ्यूज हो जाओ. मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कह रहा था कि हम, हालांकि वो एक है, हमने उनको आर्टिफिशियली सेपरेट किया. और मैंने, ये तो भगवान ने किया, मैंने नहीं किया. शब्द को एक कहा शब्द संज्ञा, एक कहा रूप संज्ञा, एक कहा गंध संज्ञा. क्यों कहा? सबको रूप कहते, बिकॉज that is our experience. They are distinct experiences constituted by same ultimate building blocks. तो अगर आप अल्टीमेट की ओर देखना शुरू करेंगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा के बारे में कहा गया इट इज बेस्ड ऑन आवर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, नॉट ऑन योनिसो मनसिकारा बिकॉज दैट इज पन्या, बट ऑन मनसिकारा, नॉर्मल अटेंशन ऑफ ए डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ नॉर्मल वर्ल्डलिंग, नॉर्मल पुथुजना who sees things as they appear to be. तो उस आधार पे मैंने संज्ञा का डेफिनेशंस दिए हैं. पर मुझे लगता है भगवान के भी यही इंटेंशन है, बट आई कांट वाउच फॉर इट ऑब्वियसली, बिकॉज डिटेल में कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है. तो उस आधार पे हमने संज्ञाओं को डिस्टिंग्विश किया ताकि हमारी क्लैरिटी बनी रहे. क्योंकि अल्टीमेटली हम क्यों कर रहे हैं ये सब? वी आर नॉट डूइंग इट फॉर एकेडमिक पर्पसेस, वी आर डूइंग इट टू आइडेंटिफाई वेयर इज द अटैचमेंट व्हिच इज कॉजिंग सफरिंग. ओके, तो वही बात है ना, बाकी बातों तो ठीक है. अब मैं कहूँ 5-4 महाभूतों का सब कुछ बना हुआ है, तो मैं किस महाभूत से अटैचमेंट हूँ भाई, मुझे कैसे पता चलेगा? बिकॉज आई डोंट नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स साउंड, आई डोंट नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टेस्ट, मुझे नहीं मालूम. और टच में वो कहते हैं कि आपो धातु नहीं होती. I just have to accept on faith. I don't know. I experience touch. I don't experience individually the Prithvi Dhatu, Vayu Dhatu, Tejo Dhatu in touch. Of course, depending on the conditions, I might sometimes experience, yeah, it's hot. Sometimes experience it's heavy. Sometimes experience there is movement. That's a ballpark kind of assumptions. तो इसलिए हम जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन भगवान ने की है उसके आधार पे, तो धम्म के बारे में
हमने ये बनाया कि भाई जो आइडियाज हैं, विचार हैं हमारे हैं, उसके बारे में लेंगे, क्योंकि अब आइडियाज विचार तो रूप के बारे में भी होते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हम उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको धम्म संज्ञा में डाल दिया है, तो इसलिए इसको इधर इतना हम सिर्फ वही लेंगे, और सारी इन सबको बाकी संज्ञाओं में डाल दिया। Ideas about form we have put in roop sanya, ideas about speech we have put in shabda sanya, and so on. That's a convenient way of categorization so as not to confuse this stuff. Does it make sense? Kindly let's understand it so that we can really get at the knack of it. Then the questions will automatically get answered actually. Yes sir, making sense sir. Actually मैं भटक रहा था, मैटर बोल के मैं डॉल्टन थ्योरी में जा रहा था कि कुछ जो वैसा भगवान है ने मटेरियल। जिस तरह से भगवान ने समझाया, जैसे समझ में आता है वो उसको यही, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है भगवान को मालूम नहीं है कि वो सब डिराइव्ड फॉर्म्स है, उसका ऐसा किया जा सकता है, ऑफ कोर्स ही नोज दैट, बट ही इज पुटिंग अस इन द पर्सपेक्टिव। दैट्स व्हाई ही सेज sanya is all sanyas are mirage, which means they are based on appearances. तो उस सेंस से हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें ये बात क्लियर हो जाएगी तो जो प्रश्न आए हैं ना वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। हाँ शिवेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था और मैं काफी कंफ्यूज हो चुका हूँ सुबह से। सर ये जो हम अभी आइडियाज और कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट संज्ञा है, धम्म संज्ञा, तो सर इसका बनने का भी तो कुछ आधार होगा ना, मतलब ये कितनी, तो ये क्या वो वही 5 जिनको हमने एक्सक्लूड किया है, उनको एक्सक्लूड करके जो बने हैं, जो हमारे को भगवान की शिक्षा से बने हैं या कोई और किसी से इंटरेक्शन से बने हैं, so which are basically thoughts by themselves. They are not dependent on whether they came from roop or whether they came from sound. We're not getting into those details. They are basically ideas. That's all we are saying. Those ideas may have originated from our study, from our experience, from our study of Buddha's teachings, from our study of other teachings, and from our own experience. हमने साधना करके देखी, ये वाली साधना ठीक है तो पुरानी वाली सब गलत है, ये हमने अपना एक परसेप्शन बना लिया। तो हम उस तरह की चीज़ों को महत्व दे रहे हैं क्योंकि वो अटैचमेंट बहुत भारी दुख का कारण है। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग, नॉट इंटरेस्टेड इन otherwise of any interest really, isn't it? We're not interested in at this moment here in this discussion finding out what is right or what is wrong. That's important from the point of view of our practice. So that is a different matter because that is a question of investigating that sanya in the light of panya. Then we investigate it and figure out what exactly is appearing and what actually is the ultimate reality. That we do in the process of transformation of sanya into panya. तो आवश्यक जब हो तब हम कर सकते हैं उसको। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स प्रीटी क्लियर नाउ सर। सर एक और क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए था सर। मॉर्निंग में सर आपने एक स्टेटमेंट यूज किया था, हमारे विचारों के प्रति हमारी धारणा क्या है। जी, जो हमारे विचार जो हमारे मन में बनते हैं उनके प्रति हमारी धारणा क्या है। जैसे हमारे साधकों के मन में विचार बनता है कि असली मुक्ति का मार्ग तो भगवान की शिक्षा है, ये भक्ति तो फालतू की चीजें हैं, ये एक विचार है और उसकी धारणा स्ट्रांग बन जाती है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, यू नो दैट। अगर हम उससे अटैच हो जाते हैं तो कितनी सफरिंग होती है, हमारा बिहेवियर सबके बाकियों के प्रति कैसा हो जाता है और हम कितनी एक महत्वपूर्ण चीज को मिस कर जाते हैं। So that's what, yeah, these are the things which are causing our suffering. Whether the cow is white or black, it doesn't cause suffering usually. It can, but generally it doesn't cause us suffering, isn't it? But these things cause us enormous suffering. They shape our life. Thank you. So there, would it be right to say then in summary, I don't know whether this understanding is right, that basically Dhamma Sanya has primarily to do with our views and opinions in some way? Yeah, you can say so.
या बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो व्यू है उसको अगर पाली में डिट्ठी करेंगे तो उसके अलग सारे मतलब आ जाते हैं इन ए कैरोकियल लैंग्वेज। या इट इज ओके। बेसिकली जो हमारे विचार हैं उनके प्रति जो हमारी समझ है, वी कैन से व्यूज, यू कैन से ओपिनियन, या दैट्स ओके। इन जनरल इट्स टर्म, दैट्स ओके। थैंक यू। बिकॉज अगर आप इसको अंग्रेजी में बोलेंगे या पाली में बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो कहेंगे डिट्ठी है, व्यू का मतलब होता है डिट्ठी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, देन यू गेट इनटू अनदर कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, We have to be tread very carefully so that we don't mix up the two things. अभी हम colloquial भाषा में बात कर रहे हैं और टर्म्स को उतना ही यूज करना है जितना हमारे लिए सहायक है। और ये विचार हमारे बाकी सेंस ऑर्गन से फॉर्म हुए हो सकते हैं, व्हाट यू हैव सीन, हर्ड, फेल्ट, एटसेट्रा। Yeah, but we don't call them रूप संज्ञा or शब्द संज्ञा, we call them dhammas. Dhammas which result in dhammas. And there are thoughts which result in perception of a particular kind. Right. So I see something that produces a thought which results in a certain sanya. So that now you are suggesting we call it dhamma sanya. Now I'm saying when I see something and a thought arises, well, normally on seeing we see a form. Okay, let me put that example. We see a form and then we say it is a tree. No, tree is a thought. Tree is a mental construct, but it's very useful. So we call it a tree. But calling it a tree doesn't have any attachment to calling it a tree. It doesn't cause much problem. Sure. So that's I sanya. That is the chakku sanya. Now my view about the tree बहुत अच्छा है और उगाने चाहिए. Trees जो है होने नहीं चाहिए. Sure. Trees को काट देना चाहिए, हमको मकान बनाने हैं, या whatever may. Or no, trees should be preserved at all costs. Now then I form an opinion about it based on my study or experience or whatever. Because that opinion is not formed by I. It is formed by thinking, by listening to somebody, by reading books, by understanding trees की importance क्या है environment में. And it's a lot of knowledge base which goes behind it, and then I form an opinion. इसी पे मुझे याद आ रहा है सब कि वो यूकलिप्टस के जो पेड़ थे वो पहले बोला कि ये बहुत जल्दी उगते हैं तो इनको लगा दो, तो सारे हिंदुस्तान में यूकलिप्टस के पेड़ लगने लगे और बाद में ये पता लगा ये तो पानी को पी जाते हैं पूरी तरह से, और जहां जहां वो लग गए वहां पर उसका वाटर का लेवल ही गिर गया. तो ये परसेप्शन बदल गया regarding, not regarding all trees but regarding a particular tree. Yeah, but that has an effect in our behavior, isn't it? But this view that eucalyptus trees should not be, if I stick to this view, eucalyptus trees को नहीं रखना चाहिए. This is a thought now. कि हमें eucalyptus tree कहीं नहीं लगाना, and I get attached to it. That is the key thing. If I get attached to it, then जहाँ लगेंगे मैं उनके साथ लड़ूंगा, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. See? That is the problem. We are interested in understanding all that, how it is causing suffering. That is of key interest to me. That is what I'm thinking. We had a long discussion in our group about it. But this, strictly speaking, this eucalyptus tree is based on a tree, but it is based on a view of knowledge about the tree. Okay? The more important issues come when we are human beings. That's where the issue comes. We listen to voice of a human being. We see a human being, and then we form an opinion. For example, I see a person and I recognize he is my father. My father is a concept, but I have a understanding about it. Now I form an opinion about what father should be and all that. Now it's a question of distinction whether you want to put it in Dhamma Sanya or the Rupa Sanya. That's your choice, I would say. Now the issue is really attachment to that Sanya. What's the attachment? Father should be like this. I've heard father should be like this, and my father is or not.
is not like that, and it causes suffering. So that is the key issue, is how am I getting attached to my perceptions? So that is the point which we should try to identify, because it's not a question of immediate cause-effect relationship. It is a question of overall understanding about a particular form or sound or taste or about an idea. We specifically try to exclude other things from this, so that we will remain clear, because otherwise there will be total मिक्सअप हो जाएगा, पहचान ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है. हम आइडिया से हमारी क्या अटैचमेंट हो रही है, या एक चीज से अटैचमेंट हो रही है, या एक शब्द से अटैचमेंट हो रही है. ये थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए इस तरह से हमने अपने को लिमिट कर दिया, और कुछ नहीं. जस्ट लिमिट, आई हैव जस्ट लिमिटेड माई सेल्फ इन दिस मैनर, ताकि मेरी समझ में ठीक से आ सके, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं. क्योंकि मैं अगर हर एक कनेक्शन जोड़ता फिरूंगा, देन आई विल बी लॉस्ट. बिकॉज अल्टीमेट रियलिटी मैंने समझ रखी है, अभिधम्मा समझा हुआ है. मैं अगर उसके आधार पे इंटरप्रेट करूंगा, देन एवरीथिंग इज एम्प्टी. देयर इज नो फादर, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो साउंड, नथिंग. देयर इज ऑल elements moving around here and there. All sound, smell, taste are 4 Mahabhutas moving around here and there. So then that's fine. Then there's no attachment to it. I'm intelligent enough to see, या किसके पृथ्वी जादू को अपना मानूं कि वायु को अपना मानूं. So the whole thing drops. That is what we have to practice. ऐसी situations में जहाँ पर let me complete. That is why we are seeing every perception के साथ हम साथ में अपनी तरफ से संज्ञा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी सफरिंग से मुक्ति मिल सके. क्या कह रहे हैं, हर एक परसेप्शन को जानो, उत्पत्ति का कारण जानो, उसके सेसेशन का कारण जानो, ताकि तुम्हें कंफर्म हो जाए कि ये अनित्य है भाई, ये परफेक्ट नहीं है. फिर उसमें आस्वादन जानो कि इसमें ग्रेटिफिकेशन क्या है, ये आस्वादन है इसमें, और उसमें खतरा क्या है वो जान लो, तो क्लियर हो जाएगा ये दुख है भाई. एंड देन you understand it is impermanent, it is changing, it is beyond my control. So you understand it is not me, not mine. And that's how we really progress in the direction from sanya to panya. तो वो सारे पॉइंट्स हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमको समझने की जरूरत है. बाकी सब हमने आर्बिट्रेरी, खासतौर पे धम्म संन्यास में आई हैव डन आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन फॉर माय ओन क्लैरिटी. आई डोंट वांट टू मिक्स अप द थिंग, बिकॉज देन देयर विल बी रियल प्रॉब्लम. ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने उसको लिमिट कर दिया. आई हैव बीन ट्राइंग टू सर्च इफ देयर इज सम अदर एडवाइस अवेलेबल. मुझे कुछ मिला नहीं. अगर आप में से कोई ढूंढ पाए कुछ एडवाइस तो दैट बी वंडरफुल. सर एक सेकेंड, जब हम धम्म संन्यास की बात कर रहे हैं तो जब हम धम्म संन्यास की बात कर रहे हैं तो हम, क्योंकि हम अपने पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, धम्म के लिए हमारा धम्म मतलब थॉट्स. प्लीज लेट्स बी फोकस, बिकॉज़ धम्म एक सेकंड सर, एक नहीं सुन लो, बिकॉज़ नहीं तो वो प्रोलिफरेशन बहुत हो जाएगा बेटा, प्रोलिफरेशन हो जाएगा. मैं धम्म को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया थॉट्स एंड आइडियाज. बस अब बताओ सर. मैं ठीक है, थॉट्स एंड आइडियाज मैं वहीं तक ही सीमित हूँ, लेकिन जब तक हम अपने थॉट्स को देख नहीं पा रहे कि ये हमारे थॉट्स हमारे को, दिस इज सीइंग इज नॉट बीइंग डन. there needs to be seen first कि ये ऐसे है, और फिर उसके बाद में वो या तो हम बहुत चिपकाव तो हम, और फिर उसके बाद जो चिपकाव की बात है वो तो सेकेंड इसमें आ जाता है. लेकिन जब वो सीइंग मिसिंग होता है तो फिर देन एवरीथिंग फॉल्स फ्लैट. फिर हम सोचते हैं कि वो बाहर की चीज है. एक सेकेंड, जस्ट लेट मी, जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी सी थिंग्स, ये बाहर हो रहा है, पॉलिटिकल सेटअप है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन देयर इज वन अंडरस्टैंडिंग विद इन मी आल्सो दैट नीड्स टू बी सीन फर्स्ट, एंड देन आपका फिर वो जो पर्सपेक्टिव आता है दूसरे को देखने का, वो भी थोड़ा बदल जाता है. हम परसेप्शन किसको कह रहे हो बेटा? आप परसेप्शन किसको? अगर सपोज मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर मेरे को ये लगा कि मेरे को सपोज मैं फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सपोज मैं
कम्युनिस्ट की बात कर लूं या फिर जो थोड़ा सा चलो कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई एग्जांपल ले लो, हाँ कोई एग्जांपल ले लीजिए। बोलो बोलो। तो जब जो मेरा उसको देखने का नजरिया है, एक कम्युनिस्ट की बात कर लीजिए और एक हम सपोज देखने का नजरिया किस पे निर्भर करता है? देखने का नजरिया किस पे सर निर्भर? वो तो इनपुट बहुत सारी जगह से आता है हमारे हाँ, पास, तो उसी को स्कूल से परसेप्शन आता है, कहते हैं ना बेटा, उसी को तो परसेप्शन कहते हैं। करेक्ट, परसेप्शन आ गया, बट अब मैं उसके साथ अटैच हो गया हाँ और हो गया, दुख में और दुख हुआ। सर दुख तो आ गया, ठीक है, मान गई कि दुख का जो है, लेकिन उसके पहले जब फॉर्मेशन है तब भी हमारे को देखने में भी तो हमारे को अगर हम उसको बेटा ठीक से देख पाए, योनिसो मनसिकार देख पाए, तो परसेप्शन ही क्यों बनाएंगे? समझो तो सही। Exactly, हम नहीं देख पा रहे हैं ना, वो सत्य है, वो सत्य है। We don't have to argue about it. मेरा क्वेश्चन ये है कि why we are studying something which is outside, why we are not studying inside? Perception is not outside, it is in me. It is me, that's what. Yeah, it that's is what me. it's my perception. I mean, put in a colloquial language, it is my perception, which is something which I am making. Exactly. Politicians are not cause of my suffering. I am the cause of my suffering. कभी भी नहीं रहेंगे. I have a perception politicians should be honest. Right. It's not saying tiger should be vegetarian. अब कर लो, बनाए रखो perception. What will you do? You will suffer. कोई vegetarian tiger तुम्हें मिलेगा ही नहीं कभी. सर हम लोग तो फिर जो स्टडी कर रहे हैं, तो देन व्हाई वी आर स्टडिंग टेकिंग. सुनो ना बात, वी आर ट्राइंग टू फाइंड हमारा परसेप्शन क्या है जिसके कारण हमें दुख हो रहा है, ये बात। वेदना पश्चात तन्हा जो है उसके पीछे परसेप्शन छुपा हुआ है, ये दिक्कत है, वो सामने नहीं आता। सामने आ जाए तो क्या दिक्कत थी, इतनी चर्चा नहीं होती, वेदना के बारे में चर्चा नहीं हुई, रूप के बारे में चर्चा नहीं, क्यों? वो सामने दिखता है, संज्ञा दिखती नहीं है, वो छिपी हुई है, जो कि हमारी वेदना को फस को वेदना में कन्वर्ट करती है, प्रिय वेदना या अप्रिय वेदना या न्यूट्रल, और हम फिर अपनी अविद्या में बहते जाते हैं। सो दैट इज द की फैक्टर वी हैव टू सी, कि अगर मुझे कोई चीज बुरी नहीं लग रही, इसका मतलब एक अप्रिय वेदना हो रही है, वो मानसिक वेदना हो या फिजिकल हो, दैट्स अनदर इशू। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो हम कहोगे हाँ शरीर में वेदना हो रही है, उसको देख लो, धीरे धीरे कम हो जाएगा, या बट परसेप्शन वही रहा तो बार बार दुख होते ही रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शेर कभी भी वेजिटेरियन नहीं हो सकता, फिनिश्ड, तो दुख होगा ही होगा। तो हमको परसेप्शन बदलना पड़ेगा, शेर वेजिटेरियन नहीं होते, फिनिश्ड, and there will be no suffering. So that is the point which is being made. I put it in a crude manner ताकि वो clear हो। Okay. So that can I slightly prolong the discussion if it is not too late? It's not a big question. Probably sometimes, I mean, the sutta does tell us where does it all begin. It begins with contact or ignorance or whatever you like to call it. But now suppose we are talking about, I mean, we are talking of ultimately the objective being Sanya Nirodh, Vedana Nirodh, etc. So how does this Nirodh actually feel for us? How do we know? How can I tell you, sir? How can I tell you? How can anybody tell you? Maybe there are in this world 10 people who can tell you that. Suppose I'm at ease with things in general. Is that a we have to be at ease with our lack of understanding. That's one of the fundamental issues. We have to be at ease with the fact that ये मुझे समझ में नहीं आया है और ये मेरे समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन सेंसरी एक्सपीरियंस है। इसको मैं बुद्धि के माध्यम से समझने की कोशिश करूंगा तो मेरा कंफ्यूजन बढ़ता ही चला जाएगा। Now this we have to come to accept this, that Nirodha, Nibbana, they are concepts. That for me they are concepts, and I have no way of figuring out other than the conditions necessary to reach it, which Buddha has kindly explained to me. Tanha khayo, sab sankhara samatho, sab upadi pasni. So I try to drop upadis. I try to drop the sankhara. I try to drop tanha, and then hope for the best. So that is true. I see what you are saying,
But I think एक जनरल गुड फीलिंग तो हो सकती है ना कि हाँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। And therefore, perhaps बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं तन्हा ड्रॉप करता हूँ तो आई नो दैट या मेरा डिग्री ऑफ सफरिंग कम हो रही है। आई नो इट फॉर श्योर। अगर मैं उपाधियों से अपने को डिस्टेंस कर लेता हूँ, आइडेंटिटी नहीं बनाता, आई नो फॉर श्योर। अरे मैं संखारों के ऊपर चक्कर में नहीं फंसता। I calm them down, their eyes, and I look at them. I know it gives me freedom from some, because every practice of mine, उसकी क्या validity है मेरे understanding में, मेरी suffering perceivably कम हो रही है या नहीं। Finished. So suppose I keep asking myself how I'm feeling, and if the answer comes out, I'm okay. So is that a good beginning You have to see, all the feelings are relative. जैसे मैंने कल भी निवेदन किया था कि आज के और it can't be done every hour or every day, just over a large time period. Right. Do I feel that there is a discernible improvement in my understanding of the world, discernible reduction in my attachment to the world, discernible reduction in my tanha? These things I can roughly figure out on the basis of Vimamsa, quieten down the mind peacefully, reflect on my past experience, and then see what is my present experience under the same situation. And I get some ideas कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है. More than that, it's a matter of then more and more deep samadhi. I agree. That's true. Thank you, sir. Vaibhav, you have some questions. Firstly, thank you so much for your questions. I'm really grateful to you, Vaibhav. No, sir, no issue. Sir, in the same line, I just want to distinguish between two things. Let's say I have first perception कि ice creams are nice. Okay, this I understand as Jivva Sanya. I have second perception कि मेरे को वही आइसक्रीम खाना है जो दूसरे लोग खा रहे हैं. I understand this as attachment to thoughts like Dhamma Sanya. Is that correct understanding? Issue is, as I said, the key issue is what is the basis of Sanya? Okay. As for the teaching of the Madhupindaka Sutta, the Sanya which affects my which affects my perception, which affects my Vedana on a sense door is that Sanya. Okay. So if I have a perception about a material object and it affects my Vedana when I come in contact with that material object, then it is that Sanya, otherwise it is something else. Okay. It's not a question of what am I going to choose. That's a sub-secondary, tertiary thing. अगर मेरे मन में ये भाव है और या तो वो अनुभव पे आधारित होगा, ठीक है ना, कि मैंने खा के देखा है, मजा आया था, या किसी ने कहा जब तो मैंने उसकी बात सुन ली तो वो मेरी एक थॉट वाली बात बनी, अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया. That is just a thought which is given to me. Okay? And I verify that by actually doing that experiment. And then the Jiva Sanya operates and the Vedana becomes pleasant or unpleasant depending on the perception which I have formed or depending on the expectation. And that expectation creates an effect on the mind. अगर मेरे को ये बात कोई बहुत मेरा खास प्रिय दोस्तों का यार मैंने बहुत खाई है, बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसके बाद एक्सेप्ट कर ली, तो एक वो माइंड में थॉट का परसेप्शन बन गया इस तरह की चीज खाने से अच्छा होगा. एंड नाउ आई एक्चुअली गेट दैट, देन देयर इज ए मेंटल गुड फीलिंग इवन बिफोर आई ईट इट. Mentally I get a good feeling, so that is a Dhamma Sanya which is creating good pleasant mental feeling, because what I wanted is in front of me. But then when I eat it and form an opinion, then it becomes a
Jiva, the Rasa Sanya. There is Jiva and Sparsha Jiva, Jiva's Vijnana, Hasa, and Rasa Sanya, being because of the taste being very pleasant to me, and I feel, oh, it's a good thing. Yeah. Now it converts into Rasa Sanya, and it becomes strengthens with repeated exposures of that kind. Okay, sir. Just to extend one thing, likewise you said कि आइसक्रीम खाया और उसके बारे में रस संज्ञा बनी कि this is nice और attachment बन गई कि मेरे को आइसक्रीम खाना है. So now I will work on the attachment or basically this rasa संज्ञा. And work on what I will do. इसमें gratification तो है, इसमें danger क्या है? मान कहते हैं कि भाई जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वेदना का भी एक्सपीरियंस है खाने में, तो उसमें डेंजर क्या है? वेदना, जो ये वेदना आ रही है उसमें क्या डेंजर है? जो संज्ञा बनी है उसमें क्या डेंजर? अगर हम संज्ञा की बात करें, ये परसेप्शन कि आइसक्रीम खानी अच्छी चीज बात है, इसमें डेंजर क्या है? Then I'll investigate and see. Maybe eat 10 ice creams in one day and then I'll know the danger. Okay. Because the pleasure obtained will continuously reduce. Continue. एक पहली आइसक्रीम खाने में जो प्लेजर आएगा वो 8वीं आइसक्रीम खाने तक नफरत हो जाएगी. So we see the impermanence of the experience. That is what Buddha says is the danger, because the experience is impermanent, changing, and we see the danger. Okay, sir. And then we say, भाई इस attachment को drop करो, नहीं तो दुखी होगा, मारे जाएंगे. That is the third part, Nissarana. That's the structured method Buddha gives us for reflection and practice. Yes, sir, correct. So in this case, I will like give up ice cream. Khana, like I made my perception. I'll first change my perception that eating ice cream is very good for my health or whatever. And I'll recognize it is good for taste, may not be good for health. Then that's a question of investigation further. When we identify the dangers, then we do those kind of analysis. And then, having given up that perception, then the difficulty of dropping it is reduced substantially. तो मेरा perception बना रहे कि यार मीठा खाना तो बहुत अच्छा, डॉक्टर ने कम वक्त कह दिया मत खाओ, तो बहुत दुख हो जाता है, क्योंकि perception तो वही है. और इस कम वक्त डॉक्टर ने कह दिया, क्या करूं, फंस गया, मर गया, मैं नहीं खा रहा. And that is enormous suffering. That's why it says you drop the perception by understanding, and then it becomes easier to get rid of the tanha also. जो उसके प्रति तन्हा है वो भी drop हो जाएगी, जो उसके अंदर उसके प्रति सुख लेने की टेंडेंसी है वो drop हो जाएगी, वो आसान, sorry I should say आसान हो जाएगी. Yes sir. So same thing यहाँ पे रस के प्रति तन्हा है. Okay. So that is this next level of operation which we will discuss in the sankharas. Okay? That's it, sankhara which is formed of that. Okay, and as I said, जो second perception मेरा था कि मेरे को बस दूसरे जो आइसक्रीम खा रहे हैं वही मेरे को चाहिए. मेरे को आइसक्रीम खाने से इतना मतलब नहीं है, but जो दूसरे खा रहे हैं ना वही मेरे को चाहिए. तो ये मेरा धम्म के प्रति it can have various connotations. No? It can have connotation of self-view, that is good, and I should also be as good as them. It can have connotation of that they are taking, that must be better than this. So you must really figure out what exactly is that, isn't it? The issue is whether this feeling that ये खा रहे हैं तो मैं इसको खाऊंगा किस आधार पे based है. So that can be a further investigation. There may be many reasons for it. We'll have to investigate and find out, isn't it? Okay, it may be based on the expectation of better taste. It may be based on expectations of showing off. It may be based on expectation that ये जो मैं खा रहा हूँ वो सस्ती है, वो महंगी है, तो मुझे महंगी खानी चाहिए. So many mind operates in such funny ways. You know? One has to really figure out क्या हो रहा है, ताकि हम उस चीज को drop कर सकें. If the sannyas are held loosely, then they don't bother us too much. The problem happens when sannyas are grasped. Because sanya is essentially a functional thing. उसको हम functional रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं.
जैसे ही उसको ग्रैस्प करते हैं या उससे अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, उसमें इमोशंस को जोड़ देते हैं, then it becomes a real suffering. That is really the key issue. That's why I've been trying to separate out the two things, functional, this I've just done it on my understanding. It may or may not, I have not seen it canonically done in that manner. But मुझे लगा कि मेरे को मदद करता है, इसलिए ऐसा किया। मुझे समझने में मदद कर रहा है, तो ऐसा करना अच्छा है। And I thought it is helpful to the feedback I got. It is helping. Okay. Thank you very much, sir. Reached 9 o'clock.